हरि ओम गंगचमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुगंगे कुरुकुरुतया गंगा प्रवासे तुष्कं एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थानकालभन्ध विष्णोर्विष्णुअद्यपने आषाढशुक्लनवम्यां शुभदे शुक्रवासरे चित्रतुलागते श्रीचन्द्रमसि च शुभे स्थिते श्रीभास्करे मिथुने च जालोनमण्डलान्तरा श्रीसाहेब सरकार श्रीहनुमन्सुमन्दिरे गोळन्त्रा गौतमगोत्री कैलासलोचनात्मक दुर्गाप्रसादमासाद्य कनकेश्वरकृपया करिष्येऽहमभिषेक मारात्रिकं च तर्पणं कनकेशबुद्धेशभ्यं साहेब सरकारस्य सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय वै विश्वकल्याणकामी च कामये सर्वमङ्गलं जगन्नाथो परं च श्री हरिहरात्मको गुरु श्यामसुन्दररूपेण विश्वम्भरात्मको प्रभु जय दासारथिभ्यं च नारायणो सुवैष्णव ईशान श्रीकराभ्यं च माधवंशस्वरूपेण कृष्ण कैलासवैदिश्च गोपीवासुपितृपिता विघ्नेश्वरो नरसिंहो श्रीराम भीमसेनदा दण्डपाणिश्च पितॄणां मस्तु वैकुण्ठवासति महालक्ष्म्या सरस्वत्या चन्द्रमणिश्च रेखया नीलाराहासहेमदि कमलात्मा सुलोचना भरद्वाजीयगोत्रेण मातृकुलस्य पितर राधाचरणवैभवी श्रीगणेशमतीश्वर बनमालीश्च मुक्ता च वैद्यसुवर्ण्यतिप्रिया भरतकृष्णभीमिश्च अर्जुनमधुसुलोचना सोनापद्मावती कुन्तु वासन्ती च चञ्चला जगन्नाथो सरस्वत्या ऋषिकेशो सुरमया अजानीकान्तपितॄणां मस्तु वैकुण्ठवासति आकीटब्रह्मपर्यन्तं सर्वे पितृगणाश्च वैकुण्ठमाश्रिता सन्तु प्रार्थनामि गृहाण च नमामि कनकनाथं नमामि जगदुपतिं नत्वाहं च बुद्धेशं च नमामि सर्वदेवता श्री हरिनारायण नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्ध द्वादशोऽध्यायः। मैत्रोवाच इति ते वर्णिताख्यतः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा आश्राखिर्निबोध मे समाससर्जाग्रे अन्धतामिश्रमततामिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसिं सृष्टिं नात्मानं ब्रह्मबहुमन्यत भगवद्ध्यानपूर्तेन मनसान्यं ततोऽसृजत्
सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मा भूः सनत्कुमारं च मुनिं निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकः तन्मयीच्छन्मोक्षधर्माणु वासुदेवपरायणा स्वअबध्यात् सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धिया निगृह्यमाणोऽपि बुभ्रूर्वमध्यात् प्रजापतेः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वै रोरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वच पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारुदिस्तत् करोमि ते यद् अरोधिः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदि इन्द्रियाणि सूर्या व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मनुर्मनो महिनशो महंसीव ऋतध्वजः उग्ररेता भवकालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्भृतिरुसनुमा च नियुत्सर्पिरीलाम्बिका इरावती सुधादिख्या रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणि तानि नामानि स्थानानि च संयोषणः एवि विसृज प्रजाभिः प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिस्तः स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससजात्मसमः प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तादग्रशतां जगत् निशाम्याशङ्ख्यशो योथान् प्रजापतिरशङ्कत अलङ् प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशिभिः सुरोत्तम मया सह दहन्ति वीर्दिशश्चक्षुर्विरुल्वनिः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम् तपस्यैव यथा पूर्वम् स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपस्यैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधुक्षयं सर्वभूतगुहावास मञ्जसा विन्दते पुमान् मैत्रवाच एवमाप्न भुवा आदिष्ट परिक्रम्य गिरं पतिं बाणमित्यमुमामन्त्र विवेश तपसेवनम् अथाभिध्यायत सर्गं दशपुत्रा प्रजागिरे भगवन् शक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचरत्र्याङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुवसिष्ठदत्तश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गात् नारदो जज्ञे जक्षुअङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः पुलः नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषिः अङ्गिरा मुखतो अख्नो अत्रिर्मरीचिर्मनुषोर्भवत् धर्मस्थानात् दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् अधर्मपृष्ठतो यस्मात् मृत्युलोकोर्भयङ्करः हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्च अधरदच्छदात् आस्यात् वाक्सिन्धवो मेढ्रात् निरुति पायोरधश्रयः छायाया कर्दमयज्ञे देवहूत्या पतिः प्रभु मनुषो देहतश्चेदं यज्ञ विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्मि स्वयंभूर्हरति मनः अकामं च कमेक्षतः सकाम इति न श्रुतं तमाधर्मकृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्यामुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वे कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्तं दुहितरं गच्छे अनिर्गृह्यङ्गजं प्रभुः
तेजीयशामपि तत्म सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वैलोकः ख्याख्येमाय कल्पते। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हसि स एतं गृणन्तः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिपतिस्तन्मं प्रत्याजवृडितस्तदा तादृशो जगृहोरं विहारं जगद्विदुस्ततः कदाचिध्यायत स्रष्टुर्वेद आशं चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान्यथा पुरा जातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदानैषः धर्मस्य पादश्चत्वार तथैवाश्रमवृत्तयः। विदुर्वाच स वै विश्वसृजामीषु वेदादीन् मुखतो असृजत् येनासृजत् देव तन्मे ब्रूहि तपोधन। मैत्रोवाच ऋग्यजुषाम अथर्वाख्यान् वेदन् पूर्वादिभिमुखैः शास्त्रामीजं स्तुतिस्तोमं प्रायश्चेतं व्याधात्क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजत् वेदं क्रमात् पूर्वादिभिमुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव मंत्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशोक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यमातिरात्रौ च वाजपेयं संगोत्सवं विद्यादानं तपः सत्यं धर्मशेति पदानि च आश्रमान् च यथासङ्ख्यमसृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्रजापत्य च ब्राह्मणं च बृहत् तथा वार्ता संचयशालिन शीलं च इति वै गृहे वैख्यानसा बालखेल्यो दुम्बराफेन पावने न्यासे कोरिचक्काः पूर्वं बहुवधू हंसनिष्क्रियौ आन्विकी त्रयीवार्ता दण्डनीति तथैव च एवं व्याहृता यश्च अशन् प्रणवो यशदहरतः तस्योस्निगास् लोमाभ्युगायत्री च त्वचि विभु त्रिष्टु मांसात् स्मृतो अनुष्टुप् जगति अथनाः प्रजापतेः। मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना गृहति प्रणतो अभवत् स्पर्श तस्याभवज्जीव स्वरो देहोदाहृतः उष्माणामिन्द्रियाण्याहुः अन्तःस्था बलमात्मनः स्वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनः तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा भवाति ततो नानाशक्त्युपगृहीत ततो अपरामुपादाय ससर्गाय मनोदग्धे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूय चिन्तयामास कौरव ओह अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हि एधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्ष्यतस्तदा तस्य रूपमबुद्धेवेधा यत्कायमभिचक्ष्यते ताभ्यं रूपविभागाभ्यं मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो अभून् मनु स्वयं भुव स्वराट्
स्त्री या आसीत् सत्त्वरूपा आख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ही एधां बभूरि स चापि सत्त्वरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियभ्रतौ उतानपादौ तिस्रकन्याश्च भारतः आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमः आकुतिं रुचये प्राजात् कर्दमायतु मध्यमां दख्याया आदात् प्रसृतिं च यत् आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भगवते महापुराणपारमहंसंहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति पुङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं कमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपङ्गलीला मङ्गल्यदानं मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमाद्रपा प्रणिहितानि गतानि माळागृहोर्मधुकरीव मोहोत्पडेया श्यामे श्रीं सुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवीभ्रमदानदख्य मानन्दहेतुरधिकम्बरवेद्विषोऽपि ईशानिषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्देवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजितसितकौस्तुभेय हारावलीवहरिनीलमयी विभाति कामा प्रजा भगवतोऽपि घटैक्यमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति जादडिजङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मेधि सुतभार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावन् मङ्गल्यभाजिमजुमाति निमन्मनेन मज्जावयमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाय दद्यादयानुभवनु द्रविणाम्बुधारमस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशोभिशान्ये दुष्कर्मकर्ममपनीयचिराय दूरं नारायणः प्रणयिनी नयनम्बुवाः इष्टाविशिष्टमदयोऽपि जया जयाद दृष्ट्या दृष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टे प्रहुष्टकमलोदरदीप्तिष्ट पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करभीष्टराय गिरिजेवतीति गरुडगदसुन्दरीति साकं मृदुशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेळि सुसंस्थिताय तासै नमस्त्रिभुवनेकगुरुस्तरुणि श्रुति नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूति राते नमस्तरमणीयगुणार्णवाय शक्ति नमस्तु सतपत्रनिकेतनाय पुष्टि नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकनिवारणाय नमस्तु दुर्जन्मभूति नमस्तु सोमामृतसुधराय नमस्तु नारायणवल्लभाय संप्रदान की स्वरूप मामे मात्र कणमन्नि दत्कडे हिमवासना विधि जग संबंधमन्नि शिष्टं गरे सरसिजनळे सर्वधर्मप्रमाण सर्वधर्मले सुभवतेरे वलवे मनंगे त्रिभुवनपति करे ब्रह्मयं दिग्धस्तिभिः कनकमुखावसृष्ट शोभायिनीविदुलभं प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणीममृतादेवपुत्रीं कमले कमलाख्यवलवेतं करुणापूरतनिर्मयी अवलोकमं किञ्चनानमृतं पातं गुरुने स्तुवन्ति स्तुतिब्रह्मवीरणमन्त्र इमहि त्रिभुवनरमा गुणेका गुरुद्र भाग्यवान् भवन्ति त्रिभुवि भूतवान् सुवर्णधर्मस्नेति सिंहसङ्गरसम्पन्नं ओं शङ्करे शङ्करात्मने नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवाय तस्मै शिवगुरवे नमः ओं गुरुदेवाय नमः आदि शङ्कराचार्याय नमो नमः ओं श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः। हरि ओम्। उग्रं वीरमहारवादात्मकं नृसिंहं शरणवरमुदं नमामि सप्तमी नृसिंहेन च सप्तमी महालक्ष्मी
ओम श्री गुरुचरण सरोज राज निज मन मुकुर सदारि वरनो रघुवर विमल जाग पड़ते ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वारोगमे मृत्युर्मुख्यमामृतत् ओ नमः नर्मदावधीश्वराय ओ नमः नर्मदावधीश्वराय ओ नमः नर्मदावधीश्वराय नमो नर्मदा केदारेश्वराय नमो नर्मदा विश्वेश्वराय नमो नर्मदा सोमेश्वराय नमो नागेश्वराय नमो नर्मदा त्रयंबकेश्वराय नमो नर्मदा भीमशंकराय नमो नर्मदा कृष्णेश्वराय नमो नर्मदा ओंकारेश्वराय नमो नर्मदा महाकालेश्वराय नमो नर्मदा बद्रीनाथ नमो नर्मदा मल्लिकार्जुनाय नमो नर्मदा रामेश्वराय नमः नर्मदा लिंगराज नमः नर्मदा लोकनाथाय नमः नर्मदा ईशानेश्वराय नमो नर्मदा संडेश्वराय नमो नर्मदा गोकर्णेश्वराय नमो नर्मदा ब्रह्मेश्वराय नमो नर्मदा कपिलेश्वराय नमो नर्मदा गुप्तेश्वराय नमो नर्मदा श्री साईब सरकारस्थ ईश्वराय ओ नमः नर्मदा श्री साईब सरकारस्थ हनुमतीश्वराय नमो नमः ओ नमः नर्मदा विश्वकल्याणकारकाय नमो नमः ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओम ब्रह्मीरं महावीरवातात्मकं नृसिंहं विषाणं भद्रमृत्युमूर्तो नमामि ओम नृसिंहाय नमो नमः ओम नृसिंहाय नमो नृसिंहाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बालाजी नारायण नमो बालाजी नारायण बालन ओम रंग रामाय नम रंग रामाय नम रंग रामाय नम रंग रामाय नम रंग रामाय ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनावलवाय नमो नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदनावलवाय नमो नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजनवलवाय नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न गायत्री नमो नमः ओम गंगे च मणि च गदावली सरस्वती नर्मदे सिंधु जनेन्द्र गुरुदेव गंगा प्रवासतु एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थानकालं गंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः हरि ओम दुम दुर्गायै नमो नमः ओम दुम दुर्गायै नमो नमः ओम दुम दुर्गायै नमो नमः ओम करुणाधाराय नमः करुणाधाराय नमः करुणाधाराय नमः करुणाधाराय नमः करुणाधाराय नमः करुणाधाराय नमो नमः ओम पावकान सरस्वती वाजे वाजे जगीं जय सरस्वती नमो नमः या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रांकृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतरंग प्रभु सदा वंदिता सामांकार सर्वलोकित निषेधं पहं सरस्वती नमो नमः ओम सरस्वती नमः ओम संकीर्तय नमः संकीर्तय नमः रंगराधाय नमो नमः ओम सप्तम गुणशिंगन सप्तम महालक्ष्मी ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकनाथं नीलाचलनिवासं नित्याय परमात्मने बलभद्रनाथाय नमो नमः ओम बद्रीविशालाय नमो नमः ओम नमस्ते महामाय श्रीपति द्रौपदी महालक्ष्मी नमस्ते गुडारूढ़ कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तमेव माता पिता तमेव तम बंधुका तमेव तमेव विद्या द्रोण तमेव तमेव सर्वमो देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वे पितृपुरुष समागत्य सुसपन्नेवलं वैकुण्ठं प्रगच्छन्तः श्री गुरुचरणाभ्यो नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमो नमः ओम श्री हरिनारायण नमो नमः श्री गोविंद गोपीजनवल्लभाय नमो नमः श्री नारायण नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी नमस्ते गरुडारूढे श्री हरिनारायण नमस्ते गरुडारूढे श्री हरिनारायण नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तमेव माता पिता तमेव बंधुसखा तमेव विद्या द्रोण तमेव सर्वमो देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो नमः श्री हरिनारायण नमस्ते गरुडारूढे